um, ठीक है जी, लेट्स मैच आंसर्स। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मच हीट इज नीडेड टू चेंज 4 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्रीज टू 100 डिग्री स्टीम। जी, I got 9,200 joules. परफेक्ट। ठीक है जी, एंड हीट गिवन आउट 10 ग्राम ऑफ स्टीम। I got 2,100 joules. 2100। आपने इसमें क्या क्या किया था? एक तो होगी हीट गिवन ऑफ जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, एम सी डेल्टा थीटा, और दूसरा होगा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने दोनों कन्वर्जन्स किए हैं? मैंने सिर्फ एक किया। दूसरा भी करें। Is the answer 25,100 joules? इट इज। अच्छा, एक मुझे एक सेकंड दें। ठीक है, 25,100 ठीक है इसका आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये 3 किलो वॉट्स इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, लेफ्ट ऑन, व्हाट मास ऑफ वाटर विल बी? जी, कितना है आपका? 156.5 kilograms. इट वुड बी इन ग्राम्स, क्योंकि हमारे पास हीट जो स्पेसिफिक हीट वगैरह दिया है वो जूल्स पर ग्राम दी हुई है, तो इन दिस केस आंसर वुड बी इन ग्राम्स, इट वुड बी 156 ग्राम्स। ठीक है, परफेक्ट। और लास्ट, I got 1,200 joules. 1200 जूल्स, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी पास पेपर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड देन विल कॉल इट अ डे। जीसीई गाइड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। फिजिक्स, ठीक है, एंड वी आर डूइंग 2019 W23, W23. Mhm. I'll share the link here in the chat. Paste. ठीक है जी, let's start from the start. Question 1 से please. Have we done this one before? I don't. Think so. Hmm. Is the answer C? For the first one, yes. Thank you. Thank you. Yes, let's see for the first one. Is the answer D?
for the second one? हाँ जी, it's D for the second one. Correct. G for the third one, it's B. Correct. B is 15 kilometers, right? Yeah. And again, B for the fourth. Question 5, yes, it's B. B as in 2.5 meter per second squared. hmm It's not. 7 की बात कर रहे हैं ना हम? No, no, 6. 6 के लिए it's A. Correct.
हाँ जी, for 7 it's D. Correct. For question 8, it's not B. You'll have to draw a vector diagram to do this one. आपका एक वेक्टर द शिप सेल्स ड्यू नॉर्थ, तो अपवर्ड्स जो आपका वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा दैट वुड बी 20. वाटर करंट मूव्स फ्रॉम east to west. Then the second vector you can draw at the head of first one from right to left. ठीक है जी. And the third vector would be the resultant vector, and the magnitude of this third one, if you notice, you'll get a what's that called, right angle triangle. Yeah. The magnitude of that would be the square root of the sum of squares of both of these. So 20 squared plus 20 squared under root answer 28. 28 it would be. हाँ जी, C would be the answer. आपको उसकी वो वर्किंग समझ आ गई कि किस तरह सॉल्व होगा? ठीक.
ठीक है जी, यू आर लुकिंग एट क्वेश्चन 9। Yeah. ठीक है, क्वेश्चन 9 के लिए अगर जैमवर्ड पे आप देखें, व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, द आंसर इज force is rate of change of momentum. So change of momentum will be mv minus mu, and rate of change of momentum will be mv minus mu by t. ठीक है, तो if I rearrange it a bit, I'll have m common, v minus u by t, which is equal to ma, which is equal to force. ठीक है, so therefore we can say that force is rate of change of momentum. Now the question says, uh, I want to what actions increase the change in momentum. Okay, so change in momentum is mv minus mu. So force multiplied by time is equal to mv minus mu. Now, if I want to increase this change of momentum, I'll have to increase the force and I'll have to increase the time, right? So the options given, the first option says that if I double the force and half the time, ठीक है, तो doubling the force will doubling the force will make it 2f, making the time half will make it t by 2. It will not increase momentum, it would be back to the same thing. However, if I keep the time the same and I double the force for the same amount of time, yes, the momentum will double. ठीक है, the other two options are having both force and time and having the force and doubling the time. Again, if I half the force, it will become f by 2 multiplied by t, so it would reduce the momentum. And if I half the force and double the time, it will again be back to the original thing, the momentum will not increase. The only combination that will actually increase the momentum is this one, when I double the force for same amount of time. This will cause an increase in momentum, it will double the momentum as well, double the change of momentum. ठीक है. ठीक है, तो the answer for this one would be b, 9 would be b. कैलकुलेशंस आपको समझ आ गई? जी. ठीक है, had we discussed this fact before that momentum, actually force is rate of change of momentum? If we had not, so now you know, okay, rate of change of momentum is equal to force. Is the answer A?
For the 10th one, yes, let's say correct. Is it C? 11 is C, correct. For 12, is it C? For 12, it is C, correct. थर्टीन का C है, but how did you solve it? I subtracted 2.5 from 1.6. Hmm. And then I divided it from 20. Correct. 0.045. ठीक है. And then I multiply, and then, it's going to be times 10 to the power 3. ठीक है. ठीक. It's going to Correct. Correct. multiply. Correct. Correct. I remember doing these questions, don't you? Yeah, like the previous ones were different, Hmm. but from these ones, these are the same. ठीक. ठीक. ये करें, then if we have time we'll do another past paper as well. ठीक. ये करें. 14, 15. C for question 14. For 14 it's C, correct.
Is it 8 for 15? For 15 it's A, correct. Is it C for 16? For 16 it's not C, it's not C। ठीक है जी, 16 की कैलकुलेशन देख लेते हैं। फिक्स्ड मास ऑफ गैस एज अ वॉल्यूम 25। ठीक है जी, ठीक है। Jamboard, Jamboard. We have got formula P1V1 is equal to P2V2। ठीक है जी। वॉल्यूम कितना है? V1 is 25, P1 is 100, P2 is how much? P2 is what we have to calculate. Let's say X, and V2 is how much? V2 is 15, 15। ठीक है जी। तो रीअरेंज एट 100 टाइम्स 25 ओवर 15, कितना आंसर आ रहा है? 166.7. 166.7। एक सेकेंड, डिड आई मेक एनी मिस्टेक? नो, आई डिड नॉट। ठीक है, 166.7 ओरिजिनली कितना था? 100, 100 minus 166.7 change is 67 kilopascals। आपने ए ही कहा था? नहीं, मैंने C कहा था। आपने सी कहा था। एक सेकेंड, आई एम हैविंग डाउट्स, इसको दोबारा मैं एक दफ़ा देख लूँ। ठीक है, P1 हमारे पास 100 किलो पास्कल्स है और V1 हमारे पास 25 है। 100 टाइम्स 25, P2 हमने कैलकुलेट करना है, एंड ठीक है ये हो गया 15। 100 टाइम्स 25 ओवर 15, 120, ना 2500 divided by 15, answer is 167। and originally the pressure was 100, 100 से 167 हो रहा था, so there is a change of 67 kilopascals। ठीक है। Okay. So it's A for 16, right? For 16 it's A। Is it A for 17? For 17 as well it's A, correct।
understand question 18. ठीक है, डायग्राम shows liquid and glass thermometer, liquid thread. ठीक है, when the temperature of the thermometer rises, the change produces the change produced causes the liquid thread to move to the right. ठीक है, liquid expand कर रहा है. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है. क्वेश्चन ये है कि जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वाई इज इट के ये जो अंदर लिक्विड है ये राइज कर जाता है इस ट्यूब में. ठीक है, एंड द ग्लास इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज साइज. फॉर एग्जांपल इफ वी यूज थर्मोमीटर और उस थर्मोमीटर में एज वी हीट दैट थर्मोमीटर नॉट ओनली द लिक्विड राइजेस बट उसका जो सॉलिड है जिस ग्लास ट्यूब के अंदर वो कंटेंट है अगर वो भी एक्सपेंड कर जाए, would the thermometer give us the correct value of temperature? No. ठीक है, तो while designing a thermometer we have to encase that liquid within a material which would not change, which would not expand or contract for the given values on the scale of thermometer. ठीक है, so here liquid expands more than the solids. Okay. ठीक है, for this particular change in temperature and otherwise as well, liquids they expand more than solid. That principle is used in designing of thermometers, so it would be D 18. Okay. ठीक है, we haven't done the topic of conduction and convection, but these questions are largely intuitive. If you could answer 19 and 20 as well, that would be great. Okay. You know what's insulated, right? Sorry? You know what's insulated. The first line last term. The sides of the boxes are insulated. Yeah, that the heat can't pass through. Correct. Is it B? 19, it's not. 19 would be D. The question is, why do we heat the top surface and not the bottom one? That's the difference. But you said B, right? Yeah, I said B. How quickly thermal energy passes between the top and bottom of the box? Would it make a difference if she heats the bottom? Hmm. Warm air would rise. Hmm. If you really want to know the conductivity of the heat, you'll have to heat the top surface, because the principle is that uh, air when heated, warm air rises, cool air sinks. ठीक है, तो जब उस बॉक्स के अंदर हीट हो रही होगी, एयर हीट हो रही होगी, तो बाय मींस ऑफ कन्वेक्शन वो हीट एयर जो है वो ऊपर जा रही होगी एंड हीट वुड बी पासिंग थ्रू. वी वोंट एग्जैक्टली नो वेदर इट्स अ गुड कंडक्टर और नॉट. Conduction or convection का difference, I don't know if you have studied before or not. Conduction is when each molecule is passing energy to the next molecule. ठीक है, और convection में ये होता है कि एक molecule when heated it starts going around the liquid और जो भी fluid होता है और उसमें ये energy pass कर रहा होता है, not necessarily to its neighboring atom. Anyway, we discuss this thing more in more detail once we do the topic of heat conduction. The answer would be D. The reason being कि
if we heat the bottom of the bottom surface, uh, just because of the principle that warm air rises, the warm air would go up and it would pass heat to the top, and it would look like that air is a good thermal conductor, whereas it's not. So to actually check, we have to heat the top surface. So the warm air which keeps rising, it just stays at the top, and we actually get to see whether conduction is happening or not, कि वो अगले molecules molecule by molecule heat pass हो रही है या नहीं हो रही. Okay. Question 20 please. Is it E or 20? For 20 it is B. B for cricket bat. The black sand is a good absorber of insult. आपने B कहा था या D कहा था? B. B. चलें, perfect. अच्छा जी, do we have time for one more question paper या shall we call it a day? कर लें एक और? Okay. आपने इमीडिएटली क्लास के बाद तो नहीं निकलना वेकेशंस के लिए अपनी? नहीं, हम काम में रहेंगे. ऑलराइट, ठीक है. द नेक्स्ट पेपर दैट विल डू इज, लेट्स से W20. लेट मी चेक. W20. Okay, 2000 and W20. Yes, here it is. ठीक है जी, I've sent you the link in the chat box. Is it B? For the first one, you're saying D 0.58? No, 0.54. 0.54, correct. Is it B for question 2? For 2, it's B, Q only. Okay. आपने ये कहा था या Q and R कहा था? नहीं, यही कहा था Q only. ठीक.
second for question 3? Yes, it is 2.5 meters per second squared. And force for 4? It is force for fourth, correct. And B for 5? Uh, for 5 it will be no, 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 no. ठीक है. जैम बोर्ड पे अगर आप प्लीज देखें, we have got the weight of the object is equal to mg. ठीक है. And the other planet that we're talking about, the acceleration due to gravity is gravitational field strength is twice, so g is 2g. So to make it 2g, I'll have to multiply both sides with 2. ठीक है. तो weight becomes double. Yeah. ठीक है जी. अच्छा, तो इट्स ईदर ए. ठीक है. एंड its acceleration when the same horizontal force is applied. Okay, this acceleration due to gravity is towards the center of the earth. While moving horizontally, no change would occur. ठीक है. It would be the same as if the body was being pushed on earth. Okay. हम जब आपने देखा होगा कि हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है. तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम. तो इसमें देयर इज नो लेट्स से इम्पैक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का इस पे, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज सेंटर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता. इस इक्वेशन में जी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. और भी जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस हैं, एक्सेलरेशन जो है दैट इज v माइनस यू बाई टी. ठीक है. तो इसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशंस और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज ले रहे हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वुड स्टे टू बी द सेम एज दैट ऑन अर्थ. ठीक है. तो 5 वुड बी ए. Even if you forget, I think we've done this before. You have done this before as well. Somewhere I'll have to keep a record of के क्या क्या किया है. Could you do me a favor? Could you scribble down on the last page of your notebook? If you do, you keep the same notebook for every class या हर क्लास में जो भी वो साथ आ जाए उस पर पढ़ लेती हैं? This same one. ठीक है. यू हैव डेडिकेटेड वन. उसके एंड पे अगर आप प्लीज लिख लें कि W1923 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कर लिया. W1923 और आगे क्वेश्चन 1 to 20 लिख दें. ठीक है. सिमिलरली W2023 का इफ इट लुक्स लाइक कि आपने ये सारे कर लिए हैं, लेट्स जस्ट डू इट फॉर नाउ. आगे फिर विल बी माइंडफुल कि ये वाला दोबारा ना करें.
ठीक है मैडम, 6 में कोई इशू आ रहा है हमें? जो डेंसिटी फॉर आप तो मेरा ये 75 आ गया and then I don't understand what to do after that. ठीक है, अच्छा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। वुडन राफ्ट फ्लोर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 आ रहा है, और डेंसिटी साइड्स राफ्ट की इतनी आ रही हैं, मास ऑफ राफ्ट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें हम किस तरह से करेंगे, ईच ऑफ मास 100 kg, ठीक है। साइड्स आर 2 मीटर लॉन्ग, सो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 2/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो डेंसिटी कितनी आ रही है, 4 टाइम्स 0.2, And it's going to be 700 over 0.8. एक सेकेंड, 4 Which इंटू is पॉइंट टू 875. ठीक है, 0.8 हो गया इसका वॉल्यूम। The density itself is 700 divided by 0.8, कितनी आ रही है, 875, 875. ठीक है। If I add one more barrel to it, the weight would become 800, 800 divided by zero point 0.8, 1000, so I can add just one more barrel to it so that the total weight becomes 800. If the total weight becomes 800, then its density would be 1000 kg per meter cubed, Okay. ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर उससे ज़रा सा भी ज़्यादा वेट होगा तो इट वुड सिंक, ठीक है. ठीक है। वेट नहीं, मुझे मास की टर्म यूज़ करनी चाहिए थी, मास इसमें सिर्फ ये ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट द टोटल डेंसिटी, 100 प्लस 700, ठीक है जी। आई थिंक यू स्टम्बल्ड ऑन दिस वन लास्ट टाइम एज वेल, I don't remember that. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन प्लीज। अभी तो आपको समझ आ गया ना कि the mass total mass would become 800 divided by volume which would be 0.8. Yeah. Question 7 please. Is it C? 7 it is C, since the resultant force would be forwards, तो इसकी acceleration हो जाएगी, force would cause acceleration which would increase the speed. Ooh, this is a slightly tricky one.
For 8 the answer is B. तुक्का लगाया है या कैलकुलेशन की है? नहीं, कैलकुलेशन की है। चलें ठीक है। ठीक है जी। 9th। Is it D for 9? हाँ जी, it looks like it would be D but it's not. The only catch in this one is कि velocity जो है when the ball is falling down it would be, let's say, downwards, and when the ball is going upwards the velocity is in opposite direction, so it would be denoted by the opposite sign. So yes, ideally it's mv2 minus v1, but here it would become mv2 minus v1, which would make it mv2 plus v1. समझ आया ये आपको? जी, आ गया। ठीक। Is it D for 11? For 11 it's not D. Let's see, number of ways in which we use energy listed. न्यूक्लियर पावर स्टेशन में नहीं होती ना? Oh, okay. आपकी इवन जो विंड्स होती हैं दे आर कॉज्ड बाय एक वो कॉम्प्लेक्स सा फिनोमेना, आई डोंट फुली अंडरस्टैंड इट. सोलर जो sun is involved in creation and blowing of these winds around us, Okay. so it can't be D. Let's see. Is it A for 12? For 12 it's A. Correct. Correct. Is it B for 13? For 13 it is B. Correct. Is it C for 14? For 14 it is C. Correct.
For 15, it will be P, Q, and R. ठीक है, splashes water on her face. Oh, the water would gain energy from the student. The face of the student cools. The water uses energy to evaporate. If you say P, wouldn't it automatically imply Q as well? Where would water gain this energy from to evaporate? Yeah. Is it D for 16? For 16, it's not D. It's not particles that expand. It's the separation in the particles. It's A. The particles, they do not change their size, do they? It would be A for 16. Shall I explain the reason or is it clear? No, it's correct. Is it D for 17? It is D for 17, correct?
ठीक है मैम, इस तरह से होगा कि पहले स्टेप में हम करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, दैट वुड गिव अस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट वी नीड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना है, 490 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4.2। सो 490 टाइम्स 4.2 टाइम्स 81 डिग्रीज हम रेज कर रहे हैं, राइट? Yeah. ठीक है जी, तो ये हो जाएगा Q is equal to MC delta theta, तो Q is equal to 490 into 4.2 into 81। कितना आंसर आ रहा है इसका? चेक करिए। It's like 166,698. फोर, एक सेकेंड, 490 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 81। ठीक है, दिस इज Q, whatever. Now the other thing I've got is Q is equal to M times latent heat of vaporization. So Q divided by LV is equal to M. So जितना भी हमारा Q आया है 166,698, इसको हम डिवाइड कर दें 2200 से। 75.8. ठीक है जी, तो रफली 76 ग्राम्स। Okay. Is it A for 19? इट्स नॉट। हमारी जब हीट ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली एट एक्स टेम्परेचर वुड बी हायर, बट जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये जब हीट हम देते हैं तो मॉलिक्यूल्स दे मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है, तो द एयर इज लेस डेंस एट एक्स, it heats up, it goes up, then it loses its heat energy। जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली डेंस होते जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई कूल एयर सिंक्स। ठीक है, तो एट वाई एयर डेंसिटी वुड बी हायर बिकॉज इट वुड बी कूलर, having gained heat energy it would have gone up because the density would have been lesser, and there when it lost its heat energy it would again become cooler, the molecules would come closer together, being more dense it would sink, so at y air density would be more। Okay. आई होप मैंने जो रीज़न समझाया आपको समझ आया। Yeah, I guess. ठीक है, क्वेश्चन 20 प्लीज। Is the answer C? इट इज C for 20, करेक्ट करेक्ट। ठीक है मैडम, विल कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। आप जाएं अपनी छुट्टियां एंजॉय करें, एंड देन व्हेन यू आर बैक प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट आइडियली 2 days or at least 1 day before you we are to resume our classes। Okay. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।